All right, so all of you can see this. I hope that this presentation is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, so let's get started now. Okay, all right. So this is today's the topic that we'll be talking about is during the stay activities, and you know that this is something which we have already done in the first semester. This is a very basic topic. I'm sure you'll have no issues with understanding. Let us start with what we are going to cover up today. We'll try to cover up these 4 main points. But again, it depends upon the timing because today is the first class. So let's see whatever we can cover in 50 minutes class, we'll try to do that. So we'll talk about what is rooming of a guest and how is it done, about room key control, guest folios, what are different types of guest folios and who maintains it, and what are the usual queries that a hotel receives and how to deal with it. So before we start with anything, I want to show a video of Kempinski Hotels because you all know that this is a very good brand. And after this COVID thing that has happened to all of us, the hotels will have a lot of changes. So this is an eye-opening thing for all of us. So before we actually start with the topic, let us see this video. मैम ऑडियो शेयर नहीं हुआ है. अच्छा अच्छा, all right. अच्छा मैं करती हूँ सर. Please kindly scan the Welcome to Kempinski. I hope you get a pleasant journey. My name is Alina. I'm a brand ambassador Lady in Red. So allow me to accompany you throughout the whole journey. Before entering hotel, please kindly scan the healthy QR code, and while it goes green, you can continue with the temperature. Please stand closely so machine can check your temperature. After temperature test is complete, you may continue with registration. These days, it is very important to keep the safe distance, so we put the necessary marks on the floor. Thank you. All the hotel employees are wearing masks for the safety reasons. Please rest assured that your room key was disinfected. We offer our guests the hand sanitizer and a face mask for free. Our utmost priority is to provide a healthy and safe environment for all the guests and employees in our hotels worldwide. So please allow me to show you our rooms. The hotel public areas have been disinfected. Elevator buttons and services have been disinfected as well, frequently. Welcome to Kempinski Rooms. Here we provide you air purifying machine which is on for 24 hours to make the air clean and pure. All our maids are wearing protective masks and glasses. Besides, they are using the different color cloths to clean the different area of the rooms. For all our guests, we have prepared the individual hygiene set, including hand sanitizer, alcohol wipes, and a face mask. Please rest assured that our guest room amenities and linens are disinfected after every checkout. Also, we are frequently open the windows to let the fresh air in. Kempinski Bakery is a worldwide famous. Even in those difficult times, we do not compromise our food quality. Please follow me. Here we still maintain the safe distance between the guests, and all the employees are wearing the masks. As you can see, we have a great selection of the cakes. This one is actually my favorite. Can I have one, please? Also, you can order all of them online. So here you can pick up your order. Thank you.
Kempinski is always happy to please you with a different food experience. Welcome to one of our restaurants. Hi. Table for one. Yes, for me only. Just scan the health kit. Okay. The temperature check. Alright, so your temperature is 36.2. We're doing everything that's possible to provide a healthy and safe environment for you. Our waitress cleaning the table every few hours. Besides, the tables are also placed in between a safe distance. Our daily components for the food are fresh and clean. Besides, you can order everything online, including our beautiful beer. We always prepare all the necessary items for your own safety, including the hand sanitizer, face mask, and the gloves. Hello. Kempinski offers you a great selection of outstanding venues. Allow me to introduce one of them. All the room facilities are sanitized per usage. The seats are placed in a safe distance at least 1 meter. All the employees are working here, wearing a face mask, and always here to serve you. It's always nice to enjoy a drink after a long day, but before, please complete the health safety procedure. Hi. Hi, Tila. Long time no see. May I have my special drink? Of course, just a second, please. By scanning this QR code, our guests can receive their complimentary drink to start their evening. Because here to gin and tonic. Great. Good. I will. Thank you. Attila is our director of beverage who has a lot of international awards, so he will make you even unforgettable with his special drinks. We hope you enjoyed staying with us, and we're looking forward to welcome you to Kempinski very soon. All right. So now, before we start with the actual class, let's take your attendance. Give me some time so that I can take your attendance. So I would request everybody to please switch on their videos so that attendance can be taken. Jackie, you're not visible. All right, so we're taking attendance. Smile, everyone. Mridul, smile de do. हर्षित चावला, आपका वीडियो भी ऑफ है बेटा. फलक धन्याल, वीडियो ऑन करो. Amit, you're not visible. Nakul, Suraj. Suraj, Nakul, you're not visible. Piyush, you're not visible. Piyush. ये दाढ़ी वाले कौन है? All right. Okay, so attendance is done. Thank you very much.
All right. So now we have seen a video of how hotels are going to work after COVID-19. So this was an eye-opening thing for you. I'm sure you must be reading a lot of things about how the hotels would be now commencing its operations. Please keep yourself updated because it is not a part of our syllabus, but so it will be difficult for us to talk in detail about it. Right now, we'll come back to our topic and we'll talk about rooming of a guest. I'm pretty sure that you all know what is the meaning of the word rooming. Rooming, as the name, as the word itself has the word room. That means taking a guest to his or her room. You have all, I know that in the last semester you have done the escorting of the guest. I hope you remember it. So the moment when the guest comes to the hotel, he's been received, and then the formalities, check-in formalities takes place, and then he's taken to his room. That procedure is called as the rooming, right? I hope it is clear. Rooming means taking the room to his guest. So upselling and orientation, that all comes under rooming. When we see this definition, it says that when we take the guest, installation of guest and his luggage in the room is rooming. All right, so you already know that this is usually done by the bellboy, but we don't say always because it all depends upon the status of the guest. If the guest is a VIP, then of course it will be done by maybe a general manager or a front office manager. And you already know that these days the hotels don't use traditional keys like the keys that we use at home. Usually tala chabi jise hum bolte hain, those are not used these days. So what is used is a card key and a key card. And as you can see, it is written in the presentation, key card / welcome card. So key card also serves as a welcome card for the guest. So in the picture that you see, you will see a magnetic key card, and also at the top you will see you will see a card key, magnetic card key, and on the top you see a key card, that is a welcome card. And if you I don't know whether it is clearly visible to you or not, but if you look at it carefully in the first photograph that is at the top, you will see that a kind of pouch is made. So this key will fit in that particular pouch. All right, so I hope it is clear that card key is this magnetic card that you see, that is to open the door of the guest room. And on the top, the first photograph, white colored, that is basically a key card or a welcome card. So we don't just hand over the key like that to the guest. We always put it in a key card first. All right. So this is actually not a part of our syllabus, but we are still covering it because we are using online classes. So I can show you videos. It is easy. This is for your information, for your knowledge, that there are different types of card keys that are being used in the hotel. This is the most popular one. And this type of card key is called as magnetic stripes card or mag cards. All right, and because the name itself clarifies that it has a magnetic strip at the top. So this is the most popular card key that is used in the hotels these days, but because it is very cost effective. The only problem is that it wears out quickly. This magnetic strip actually becomes faded after continuous use. So this is one type of card key. Then this is another type of card key which is called as hole cards or punch cards. And as you see in this photograph, there are holes made in it, right? But this is not used these days. You will never see it in hotels. So we are not discussing in detail about this. This is only for your information. The third is the RFID cards. This is now getting popular, though it is more expensive than magnetic cards. So you may or may not find in your hotel when you go for your training later. But this is for your knowledge that RFID cards are more safer. RFID stands for radio frequency identification. All right. And as you can see in the photograph, there is the RFID machine and the guest is holding a card. And when the guest brings this card near this machine, it will read it and the door will open automatically. This is fourth type of card, which is a smart card. And as you can see, it has both the features. It has a magnetic strip as well as a chip. So these are also called as contactless cards because there is no need to bring in contact with the machine. If you just bring this card near to the machine, it will automatically open.
It has a microchip installed in it, which stores the data of the guest. But because this is more expensive, so you may or may not see in the hotels. This is now after COVID-19, this is the new type of technology that will be used, and this is using of mobile phones to check in and as well as to open the door. So as you can see in this photograph that the guest is not having any card key at all. The guest is using his mobile phone to open the door. It works on NFC technology. NFC, it is written clearly, it is near field communication technology. Most of the smartphones these days are integrated with this technology, and therefore what happens when the guest registers himself or when the guest is about to come, what the hotel does, they send a code to the guest. All right, so what the guest is required to do when he brings his phone near this NFC reader, then the door automatically gets open. If the phone doesn't have this feature of NFC, then in that case he can just type that code and the door will get open. So this is a new technology which I am sure that after you go to your once you go to your industrial training, you might see this technology in the hotel. So you may not see any card keys being used these days. In case if you want to know more about how these doors open and what is the technology that is being used or what is NFC, it is very much available on the internet. I would prefer that you go on your own and read it about yourself because you are tech savvy people. So this is an assignment that you can do on your own. Now coming to the second part, rooming of the guest is done. We know we have already done in the last chapter that how the registration takes place, what is GRC, what is Form C. This we have already done, and now we have also discussed what is the meaning of the word rooming and what are the different types of card keys. So now after moving from room in, we talk about room key control. You all know that earlier when there were traditional keys, it was very difficult to ensure the safety of the guest, because if the guest misplaces his key, then in that case it was very difficult to to trace out that key, and anybody who will find that key may enter the guest room and may do some illegal activities like theft. But now with the card keys, these things have reduced. All right, so but because our syllabus has this particular thing, we will also discuss this in detail, that what is the procedure for controlling keys. All right, so I'll go back to the notes that I have with me and then we will discuss upon it. Just a minute, let me share that screen. All right, so I'll go to room key control. I hope you have these notes with you. So this is the key control that is given in your notes. You can study in detail. We'll just discuss in a while and then move forward. Like earlier when the hotels have traditional keys, जो normal चाबियां होती ताला चाबी वाली, अगर वो चाबियां होती थी पहले जमाने में, so what they used to do, the hotel used to discourage the guests from taking those keys out of the hotel. वो क्या करते थे, उन चाबियों में एक बड़ा सा की टैग, एक मेटल का की टैग लगा देते थे. That used to be very heavy. That key tag used to be very heavy. And that key tag had the name of the hotel as well as the room number on it. So if the guest will take that key out and supposingly if misplaces that key, then what would happen? Anybody who will find can use that key for illegal activities in the hotel. He can enter the hotel's room. All right, so that is why what they used to do, they used to discourage the guest from taking those keys out of the hotel. And that is why they used to put a big, huge, heavy key tag with the key. So when obviously when the guest would keep that key in the pocket, he would feel it to be very uncomfortable.
So he would obviously not want to take it out with him. He would come to the reception and hand it over to the receptionist कि मैं बाहर जा रहा हूँ, ये मेरी चाबी है, ये आप रख लो. अब वो चाबी कहाँ रखनी है? Alright, उसको रखना है mail and key rack, also called as pigeonholes. Pigeonholes मतलब कबूतर का hole. And what is the reason? उसे ऐसा पिजन होल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक छोटा सा जगह होती है, एक छोटा सा बॉक्स होता है. इट्स अ वेरी स्मॉल बॉक्स which is only good enough to keep keys and some envelopes or some letters of the guest. ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा छोटा होता है. And every room has one mail rack or key rack. तो जब गेस्ट चाबी देकर जाएगा, वो चाबी कहाँ पर रखनी है? उस रूम नंबर के की रैक में. जैसे 201 का की रैक है, तो गेस्ट 201 का गेस्ट चाबी देके जाएगा. इट शुड बी केप्ट इन 201's की रैक. ठीक है, पहले के जमाने में ये होता था. ये आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या होता था. ठीक है, अब क्या होता था उसमें, अगर इफ की इज बीइंग लॉस्ट, एक चाबी अगर गुम गई, तो ऑब्वियसली जैसे हमने बोला बहुत चांसेस हैं मिसयूज के. सो दैट इज व्हाई दे यूज्ड टू चेंज द डोर लॉक इमीडिएटली. तो बड़ा मतलब इट यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज यू नो एवरी टाइम अ गेस्ट लूजेस हिज की, then the entire section has to be, the lock of the entire section has to be changed. सारे locks change करने पड़ते हैं. That used to be very expensive. ठीक है, so ये procedure होता था पुराने जमाने में की कंट्रोल का. अभी भी maybe you might find the same procedure but in a different format, but more or less the essence remains the same. ठीक है, और उस time they used to prepare a key control sheet. एक ये sheet आपको दिख रहा होगा format. This sheet was also being prepared to control the key. ठीक है, so ये जो है ये फ्रंट ऑफिस वाला बनाता था अपने लिए कि कौन कौन सी कीज जो है वो ऑक्यूपाइड रूम्स, द कीज ऑफ ऑक्यूपाइड रूम्स व्हिच आर एट द फ्रंट डेस्क. अगर कोई की फ्रंट डेस्क पे है, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि गेस्ट अपने रूम में नहीं है. राइट, पुराने जमाने में कैसे पता होता था गेस्ट रूम में या नहीं है? कीज देख लो. अगर इफ द की इज केप्ट इन द पिजन होल, दैट मीन्स the room is occupied but the guest is not in his room. We used to prepare this key control sheet in which missing keys were also recorded. Agar guest key guma dega, if the guest loses the key, then he has to pay for the expenses. All right, so every detail is mentioned in the key control sheet. Which all keys are there at the front desk of occupied rooms, which keys are missing and the rooms are vacant. All right, details of missing keys, who stayed, what is the checkout time, every detail was recorded in the key control sheet, so that we have a complete record of the keys. As I told you, as I keep on telling you, keys जो होती है अगर वो पुराने जमाने में गुम जाती थी, there used to be a lot of risk involved. So that is why the need for this control sheet. This is the key card. आपको की कार्ड तो मैंने दिखाया, वो एक व्हाइट कलर का अभी जो दिखाया था, उसमें ये डिटेल्स दिया हुआ होता है. राइट, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन कि जो वेलकम कार्ड या की कार्ड होता है, उसमें एक पाउच होता है. इट हैज अ पाउच टू कीप द कार्ड की, एंड इट ऑल्सो contains the details of the name of the guest, room number, date of arrival and date of departure. So when the guest would want his key back, he has to produce this key card. If he's carrying this key card, it shows that he is the actual owner of the key. All right, so I hope this is clear to you. Now we move on to our presentation. Okay, so we have discussed about key control procedure, how it used to be in the earlier days, and what is the system nowadays, that the hotel will not ask for the card key because it is just a small card. The guest can easily put it in his pocket and he can roam around anywhere. And since the card key has no information, no room number on the top, so it is not difficult. It is not to the hotel security. So अगर कार्ड गुम भी गया कोई बात नहीं, नया कार्ड बना देंगे, पुराने कार्ड को deactivate कर देंगे. So things have become simplified with the use of technology. Now coming to the guest folios. ये एक folio दिख रहा है आपको screen पे. This is one sample that I have taken from Google. ये एक folio है, ठीक है, guest का folio है. और इस folio में आप देख सकते हैं, you can see very clearly that it has given all the charges.
चार्जेस क्या है, बेस चार्ज क्या है, वैट क्या है, मिसलेनियस चार्जेस क्या है. सो ये एक गेस्ट फोलियो है. ऑलराइट, सो एज यू मेक आउट फ्रॉम दिस स्क्रीन, आपको समझ में आ रहा होगा कि फोलियो का मतलब होता है अकाउंट. दिस इज द गेस्ट अकाउंट. ऑलराइट, सो व्हाटएवर expenses the guest will make in the hotel, it will be recorded here date wise. आप देख सकते हैं डेट के हिसाब से इसमें सारे उसके चार्जेस दिए हुए हैं. ऑलराइट, एंड अगर आप मोड ऑफ पेमेंट देखेंगे, इट इज रिटन बिल टू कंपनी. हम इसे बोलते हैं BTC. BTC stands for bill to company. So basically this is the folder, the folio of Mr. Khanna, who is the CEO of Rupa Exports, which is in Chennai, and this folio is made for the company to settle the bills, to the company to pay the bills. So basically this bill will be made and it will be sent to the company for payments. All right, so let us understand what are the different types of guest folios. A folio अलग अलग तरह के होते हैं. ठीक है, कुछ folios होते हैं उन guest के जो guest खुद pay करते हैं, और कुछ folios होते हैं जो guest pay नहीं करते हैं, somebody else pays on behalf of the guest. तो अगर हम सिंपलीफाई करें, अगर हम एकदम सिंपल क्लासिफिकेशन लें, तो हम बोलेंगे दैट द फोलियोज कैन बी गेस्ट अकाउंट और गेस्ट फोलियो, एंड नॉन गेस्ट अकाउंट और नॉन गेस्ट फोलियोज. और भी है इसमें, इट हैज गॉट मेनी मोर टाइप्स, बट वी विल डिस्कस दिस लेटर. एक बार सिलेबस फिनिश कर लेंगे, उसके बाद एक रिविजन में इसको दोबारा करेंगे. ठीक है, अभी टू सिंपलीफाई थिंग्स, there are two types of guest folios. One is guest account and the other is non-guest account. Okay, guest account, as the name itself says, guest मतलब कौन सा guest? Residential guest. ठीक है, residential guest, the guest who is residing in the hotel. तो वो जब आपको एक वर्ड याद होगा, चार्ज परचेज प्रिविलेज, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया था. इट इज ऑल्सो रिटन ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हैं. थर्ड fifth point जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है charge purchase privilege. So if you don't remember this, I'll just recall it once. It is a privilege given to the residential guests who can go to any point of sale and consume anything or buy anything and pay at the time of checkout. ठीक है, कोई residential guest है, होटल में स्टे कर रहा है, ऑब्वियसली he won't be carrying his wallet all the time. पूरे टाइम पैसा लेके तो घूमेगा नहीं. So what if he goes to a coffee shop or a restaurant or a bar or a discotheque, all right, or a bookshop, कहीं पे भी जाता है, कुछ भी खाता है या खरीदता है, if he buys anything, obviously he is not carrying his wallet, so he won't be able to pay at the moment. So what the hotel staff can do, they can just prepare a bill and present it to the guest and take his signature. ठीक है, सिग्नेचर लेना है बस, पैसा नहीं लेना. मनी will not be taken at the moment. So his signature will be taken and the original folio, the original bill will go to the front office cashier. The duplicate remains with the outlet. For example, coffee shop में गया, breakfast लिया, तो breakfast का जो bill होगा वो कौन बनाएगा? Coffee shop cashier. He will prepare a bill. और जो कॉफी शॉप का कैशियर होगा, उसका वो क्या करेगा? बिल बना के गेस्ट के सिग्नेचर लेने के बाद ओरिजिनल जो होगा, ओरिजिनल बिल जो होगा, वो दे देगा फ्रंट ऑफिस कैशियर को. राइट, सो दैट व्हेन द गेस्ट इज चेकिंग आउट, द फ्रंट ऑफिस कैशियर विल, व्हाट ही विल डू, ही विल प्रिपेयर अ टोटल बिल एंड प्रेजेंट इट टू द गेस्ट. ठीक है, सो चार्ज परचेज प्रिविलेज मतलब गेस्ट स्टे कर रहा है तो हम उसको प्रिविलेज दे रहे हैं कि आप कहीं पे भी जाइए, कुछ भी परचेज करिए, हम आपको आपके अकाउंट में चार्ज कर देंगे. ठीक है, सो इट इज नाउ वॉट एवर परचेजेस आर बीइंग मेड बाय द रेसिडेंशियल गेस्ट, इट विल गो टू हिज फोलियो. चाहे वो इवन इफ इट इज 100 रुपी अमाउंट, इट विल बी एंटर्ड इन द गेस्ट फोलियो. ठीक है, सो उसको हम बोलेंगे चार्ज परचेज प्रिविलेज. ठीक है, सो आई होप गेस्ट फोलियो भी समझ में आ गया आपको, गेस्ट अकाउंट समझ में आ गया. वन गेस्ट विल हैव वन अकाउंट, अकाउंट को फोलियो भी बोलते हैं. ठीक है, सो गेस्ट अकाउंट और गेस्ट फोलियो इज वन एंड द सेम थिंग. सो वन गेस्ट विल हैव और वन रूम विल हैव वन अकाउंट. सो वॉट एवर दी परचेजेस आर बीइंग मेड by the guest of that room, it will be entered in that particular folio. ठीक है, so यहाँ पे clearly दिया हुआ है कि it is a financial transaction between a resident guest and the hotel.
एंड व्हेन डज फोलियो ओपन, ये कब फोलियो हम फ्रंट ऑफिस कैशियर फोलियो कब ओपन करता है, कब क्रिएट करता है? आइदर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और when the guest makes advance payment during reservation. ये आप कर चुके हैं, आपको याद होगा reservation के टाइम पे हम बोलते हैं गेस्ट को to pay a deposit. So if the guest has paid deposit before his actual arrival, then in that case we will create his folio by his name even before his arrival. आने के पहले ही हम उसका folio create कर देंगे क्योंकि हमें उससे पैसा मिल गया है. If a guest has not paid anything, then when he registers, जब वो register करेगा तब हम उसके नाम से एक folio create कर देंगे जो कि room number wise होगा. 201 folio of Mr. A.K. Singh, इस तरह से, ठीक है? So I hope this point is clear. So folio is created for each guest, depends either at the time of reservation if he's making advance deposit or at the time of registration. All right, and whatever transactions takes place, it will be entered in the folio, and when the guest is checking out, a final bill is prepared based on the entries in the folio. ठीक है? आज परचेज प्रिविलेज हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं हाउस लिमिट की. हाउस लिमिट मतलब होटल की लिमिट. हाउस मीन्स होटल, so हाउस लिमिट मीन्स होटल्स लिमिट. अब किस चीज की लिमिट? लिमिट ऑफ व्हाट? लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू द गेस्ट. अब ऐसा नहीं है ना कोई गेस्ट स्टे कर रहा है और उसका 50 lakhs का बिल बन गया और हम वी आर वेटिंग फॉर हिज चेकआउट दैट वी विल कलेक्ट 50 lakhs ओनली व्हेन ही चेक्स आउट. नो, दिस नेवर हैपेंस. एवरी होटल विल फिक्स अ क्रेडिट लिमिट फॉर अ गेस्ट. ठीक है? गेस्ट कितना स्पेशल है, कितना रेगुलर है, कितने एक्सपेंसिव रूम में स्टे कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट एवरी गेस्ट विल हैव अ क्रेडिट लिमिट. होटल ने डिसाइड कर लिया है इस गेस्ट को इतने रुपीस का क्रेडिट देना है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मिस्टर ए का क्रेडिट लिमिट है 50,000 का. सो वॉट एवर ट्रांजेक्शन ही इज मेकिंग इन द होटल, it will be entered in his folio. Once the folio reaches 48,000 or 49,000, then the cashier, front office cashier, will inform the guest to settle his bills so far. ठीक है? So 50,000 का अगर एक गेस्ट को हम क्रेडिट देते हैं, चार्ज परचेज प्रिविलेज देते हैं हम एक गेस्ट को 50,000 का, जो कि उसकी हाउस लिमिट है, मतलब उसकी मैक्सिमम लिमिट है क्रेडिट लेने के लिए. So in that case we will wait, we will keep on entering his financial transactions in his folio, and once the folio reaches the limit of, about to reach the limit of 50,000, we will intimate the guest for payment. Sonali is looking very confused. Okay, Sonali, confusion लग रहा है ना? Okay, no problem. एक गेस्ट है, वो होटल में स्टे करता है और वो जहां पर भी पूरे होटल में जो भी सर्विसेज यूज करता है उसको वहां पर पे करने की जरूरत नहीं है. वो जाता है, खाता है और बिल पे साइन करके आ जाता है. इसको बोलते हैं चार्ज परचेज प्रिविलेज. बट ये जो चार्ज परचेज प्रिविलेज है इसका एक लिमिट है. ऐसा नहीं है कि गेस्ट जो है वो 50 lakhs तक का चीजें का बिल बनवाता रहेगा और पे नहीं करेगा. हर होटल एक हाउस लिमिट फिक्स करता है. हाउस लिमिट क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रेडिट दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू द होटल, एक्सटेंडेड टू द गेस्ट. तो अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए फर्स्ट टाइम होटल में आया है, ठीक है, ही इज अ फर्स्ट टाइम गेस्ट, देन ही विल हैव अ हाउस लिमिट ऑफ अ वेरी लेस अमाउंट. उसको शायद 30,000 का हाउस लिमिट होगा, मतलब 30,000 तक वो जो भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है, बिल पे करने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, जैसे ही 30,000 उसका बिल पहुंचता है, कैशियर जो है वो गेस्ट को रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज आप अपना बिल सेटल कर दो. सो लेट्स से वो बोलता है ठीक है, आई विल पे यू 15,000, मैं आपको 15,000 रुपए देता हूँ. तो अब क्या हो गया? 30,000 माइनस 50,000 मीन्स रिमेनिंग कितना बचा? 15,000. तो अब होटल उसको एक्स्ट्रा क्रेडिट दे देगा. अब वो होटल में स्टे कर सकता है और चार्ज परचेज प्रिविलेजेस ले सकता है. फिर से अगर वो 30,000 उसका बिल पहुंचने वाला होगा तो फिर से उसको पे करना पड़ेगा, either fully or partly. ठीक है सोनाली? I hope it is clear to everyone. अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी, you can WhatsApp and I will take this particular topic in the next class. So not to worry.
So I hope this charge purchase privilege is clear, house limit is clear, and what is a guest folio is clear. Moving forward, talking about non-guest account. ठीक है, ये बहुत important है and it's very easy to understand. Firstly, let us learn that non-guest account is commonly called as city ledger or city account. ये याद रखिए क्योंकि एग्जाम में आपको कभी भी होटल में बहुत कॉमन टर्म है, यूज होगा. ठीक है, नॉन गेस्ट अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिटी लेजर और सिटी अकाउंट. ठीक है, सिटी लेजर बहुत कॉमन टर्म है, सिटी लेजर. अब इसमें क्या होता है? बेसिकली इट रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. See, we are talking about accounts. That means we are talking about financial transactions. So इसमें क्या है? इसमें क्या आ रहे हैं? Financial transactions. लेकिन किसके financial transactions? Of a non-resident guest. In the earlier account, जो कि guest account था, उसमें हमने बात किया था financial transactions between a residential guest and the hotel. I'll go back to the previous slide. यहाँ पे देखिए guest account में लिखा हुआ है financial transaction between a resident guest and hotel. लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ नॉन रेसिडेंशियल गेस्ट एंड अ होटल. ठीक है, सो द गेस्ट हु इज नॉट रिसाइडिंग. अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस इज कि जब कोई गेस्ट रिसाइड नहीं कर रहा है, इफ अ गेस्ट इज नॉट स्टेइंग इन द होटल, व्हाई वुड वी गिव हिम क्रेडिट? हम उसको उधारी क्यों देंगे, राइट? सो बेसिकली टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, वी हैव 3 पॉइंट्स A, B and C. If we read this, we will get a clear idea. When we say सिटी अकाउंट और सिटी लेजर, ये नॉन रेसिडेंशियल गेस्ट का होता है, मतलब जो गेस्ट होटल में स्टे नहीं कर रहा. ठीक है, तो इसमें आते हैं स्किपर्स अकाउंट. स्किपर याद है? अ गेस्ट हु रन्स अवे फ्रॉम द होटल विदाउट सेटलिंग हिज बिल्स, है ना? तो अब कोई गेस्ट तो चला गया, ही स्टेड विद द होटल बट ही डिडंट पे हिज बिल्स एंड रन अवे. मनी इज पेंडिंग, राइट? फोलियो सेटल तो नहीं हुआ, अकाउंट सेटल तो नहीं हुआ, होटल को पैसा तो नहीं मिला, तो अब हम उस अकाउंट को बंद नहीं कर सकते. होटल कैन नॉट क्लोज दैट अकाउंट. सो व्हाट द होटल विल डू? होटल विल ट्रांसफर दैट अकाउंट फ्रॉम गेस्ट अकाउंट टू नॉन गेस्ट अकाउंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल सौरभ ठाकुर दिख रहा है मुझे, तो सौरभ ठाकुर मान लेते हैं गेस्ट है, ठीक है, हमारे होटल में, और वो भाग जाता है. ही बिकम्स अ स्किपर विदाउट सेटलिंग हिज बिल्स. ही वाज स्टेइंग इन रूम नंबर 209. ठीक है, so he one night he runs away from the hotel. So 209 का bill pending है, let's say 1,80,000. Now what to do with this 1,80,000? कोई पे तो करेगा नहीं, गेस्ट तो भाग गया है, लेकिन हम इस अकाउंट को बंद तो नहीं कर सकते ना. we can't close this, isn't it? तो ये क्या होगा? अब रूम तो खाली हो गया, अब उसी सेम रूम में डोमिनिक सैवियो चेक्ड इन. अब उस रूम में नया गेस्ट आ गया, डोमिनिक सैवियो. तो अब जो फोलियो बनेगा, दैट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर डोमिनिक सैवियो, नॉट बाय द नेम ऑफ सौरभ ठाकुर. बट बिकॉज सौरभ ठाकुर's account is pending, what we will do, what the front office cashier will do, he will transfer the amount of सौरभ ठाकुर, जो उसका 1,80,000 जो अमाउंट था, that will be transferred to non guest account or to city ledger. I hope this is clear. ठीक है, स्किपर्स अकाउंट जो होते हैं, जो अनसेटल्ड जितने भी अकाउंट्स होते हैं, और गेस्ट चला जाता है, गेस्ट हैज चेक्ड आउट, सो वो जो जितने भी अकाउंट्स होते हैं, दे गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम गेस्ट अकाउंट टू नॉन गेस्ट अकाउंट और सिटी लेजर. इसको नॉन गेस्ट अकाउंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो सिटी लेजर में वो चला जाता है. दिस इज वन एग्जांपल ऑफ सिटी लेजर. अनदर is that let's say the bill is being paid by the company. जैसे अभी हमने previous example देखा था, bill pay कौन कर रहा था? Company, BTC, bill to company, which means that guest will check out and the bill will be sent to the company for payment. Or in case of credit cards, when the guest pays through credit card, the bill is sent to the credit card company, and that credit card company then settles the bill of the guest. ऐसा ही होता है ना? तो अब गेस्ट तो चला गया है. जब गेस्ट होटल में स्टे नहीं कर रहा है, ही इज नो मोर अ रेसिडेंशियल गेस्ट, तो हम उसका जो अकाउंट है वो गेस्ट अकाउंट पे तो नहीं मेंटेन कर सकते, क्योंकि उस रूम में तो नया गेस्ट आ जाएगा. तो जितने भी अनसेटल्ड अकाउंट्स होते हैं, जिसका भी अभी हमें मनी रिसीव नहीं हुआ है, अनसेटल्ड मीन्स टिल द टाइम वी रिसीव द मनी. ठीक है, so what we will do, we will transfer all those accounts from guest account to non guest account.
ठीक है. सो बिल टू कंपनी होगा, तो जब तक कंपनी पे नहीं करेगी, where will that account be maintained? It will be maintained in the non-guest account. Please remember, जो stay कर रहा है उसका रेसिडेंशियल, वो रेसिडेंशियल गेस्ट है और उसका गेस्ट अकाउंट है. लेकिन जो गेस्ट स्टे नहीं कर रहा है, who has checked out, वो चला गया है, चेकआउट कर गया है, उसका अकाउंट कहाँ मेंटेन होगा? नॉन गेस्ट अकाउंट में. ठीक है. गेस्ट सेटलमेंट एक वर्ड हम यूज करते हैं, इसका मतलब है that the balance is brought to a zero. गेस्ट को जितने भी रुपए देने थे वो दे चुका है. द गेस्ट हैज पेड 100%. 1,80,000 का अगर बिल है, उसने 1,80,000 दे दिया, तो हम बोलेंगे द गेस्ट अकाउंट इज सेटल्ड. बट बिल टू कंपनी में जब तक कंपनी पेमेंट नहीं करेगी, we will not call it as a settled bill. It is still unsettled till the time we receive payment from the company. तो ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं, जब गेस्ट चले जाते हैं और उनका अकाउंट सेटल नहीं होता है, उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं सिटी लेजर में या नॉन गेस्ट अकाउंट में. ठीक है. इवन इन केस ऑफ नो शो, नो शो तो याद होगा आप लोगों को, व्हेन द गेस्ट हैज अ कंफर्म्ड रिजर्वेशन बट ही डजंट टर्न अप. एडवांस डिपॉजिट दे दिया था बट वो आया नहीं. ठीक है. तो उसका क्या करेंगे? अब वो आया नहीं, ही इज नॉट रिसाइडिंग, तो उसका अकाउंट भी कहाँ मेंटेन होगा? उसका अकाउंट मेंटेन होगा सिटी लेजर में. ठीक है. और जितने भी नॉन रेसिडेंशियल गेस्ट अकाउंट्स होते हैं, उनको फॉलो अप कौन करता है? बैक ऑफिस कैशियर. ये याद रखिए. जितने भी गेस्ट स्टे कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फ्रंट ऑफिस कैशियर. जो फ्रंट डेस्क पे जो कैशियर होता है वो ध्यान रखता है. But when the guest checks out, all those leftover accounts, leftover balance will have to be tracked by the back office cashier. तो front office में basically दो cashiers हम बोल सकते हैं. एक होता है जो front desk पे होता है और एक होता है जो back office में होता है, जिसका काम होता है to check with the companies, company को call करना, उनसे पूछना payment नहीं आया, कब तक आएगा. ये सारे follow up करता है back office में जो cashier होता है वो. ठीक है. 50 minutes हो गए हैं. We are just about to get over with this class. Only 2-3 more minutes. Okay. So we are done with the accounts. Folios हमने basically समझ लिया. Folios दो होते हैं. Guest folio for the guest who is residing in the hotel and non-guest folio who is not residing in the hotel. Now moving to the next subtopic. ये है usual queries of guest. ठीक है. तो आपको पता है कि गेस्ट जब होटल में आता है तो बहुत सारी बातें पूछता है. पुराने जमाने में गेस्ट यूज्ड टू आस्क लॉट ऑफ थिंग्स. ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब गेस्ट पुराने जमाने में पूछता था. आजकल नहीं पूछता क्योंकि उसके फोन में सारे आंसर्स हैं. बट पुराने जमाने में गेस्ट यूज्ड टू आस्क अबाउट वेयर टू गो, विच शॉप इज बेस्ट फॉर शॉपिंग. उसको साड़ी खरीदनी है फॉर एग्जाम्पल, तो साड़ी के लिए बेस्ट शॉप कौन सी है. उसको कोई पर्ल्स खरीदने हैदराबाद गया है, उसको ओरिजिनल पर्ल्स खरीदने कहाँ मिलेंगे. तो ये सब चीजें ही यूज्ड टू आस्क. इंफॉर्मेशन अबाउट सिटी, प्लेसेस टू गो अराउंड. ठीक है. होटल की फैसिलिटीज और द फंक्शंस दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द होटल. सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस गेस्ट के होते हैं यूजुअली. ठीक है. लेकिन आपको जैसे पता है कि आजकल सारे जो आंसर्स हैं वो लोगों के मोबाइल में है. सो these days guest doesn't come and ask you. Most of the questions guest won't ask you. कहाँ घूमने जाना है गेस्ट आपसे नहीं पूछेगा. He has the answer in his mobile phone. But पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में the hotel used to keep yellow pages. आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में yellow pages. ठीक है. This yellow pages used to be a directory which used to have the numbers of all the major outlets. ठीक है. तो जैसे इसको who's who गाइड भी बोलते हैं. ठीक है. तो पुराने जमाने में जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे उस टाइम येलो पेजेस होते थे रूम में. एवरी रूम हैड अ येलो पेज जिसमें सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं. ठीक है. तो पुराने जमाने में ये होता था जो आपको दिखाया है, और अब के जमाने में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है. ये सारी चीजें हैं. गेस्ट यूज करता है, गूगल करेगा, एलेक्सा से पूछेगा. ठीक है. सो दीज डेज लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय द मोबाइल फोन. सो बेसिकली अब ज्यादा क्वेरीज गेस्ट की बची नहीं है. वो ज्यादातर all he can ask about is about the hotel facilities or about the events going on in the hotel, but he won't come and ask you which place to go or which is the best shop for buying a sari or Hyderabadi pearls, because he has all the answers
in his mobile phone. तो पुराने जमाने का जो येलो पेजेस है that has been replaced by justdial.com, जिसका आपने ऐड देखा होगा, या फिर बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं वो हेल्प करते हैं गेस्ट की क्वेरीज को सॉल्व करने में. So we'll only take up till here in this particular session. ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है, इतना ही करते हैं. अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा, एनी प्रॉब्लम्स, यू मे प्लीज व्हाट्सएप, ऑफिशियल हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दें एंड आई विल टेक दोस टॉपिक्स इन द नेक्स्ट टाइम. ठीक है, सो अगर किसी को अभी कुछ पूछना है तो रचित देख रहा है, आप प्लीज रचित अनम्यूट कर देते हैं सबको, एंड अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप यू कैन ब्रिंग दोस क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स सी. All right, so I have unmuted you. Any questions, anyone? Because we have only 2 minutes left for winding up with this class. Rajit, have you unmuted? I don't see people. हाँ, हो रहा है unmute. बेटा आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर लो. Any questions or doubts right now? No, ma'am. No, ma'am. Yes, Babu, tell me. This non-guest account part, can you please explain me again? Okay, non-guest account. Skipper part, not non-guest. That's skipper part. There was a confusion. All right, I'll do that. Thank you, ma'am. Okay, ये कौन है? इतना दाढ़ी वाला. Non-guest account means the transactions of the guest who is not staying. Okay, you do one thing. There's a lot of. No. Yes, ma'am. It's So not. you give me a call after the class, and I'll explain you over the phone. Yes, sure, All ma'am. right. Okay. Any other problems, anyone? Ma'am, city count. What is city count? City account. Okay, what I'll do is city account is a problem with everyone. So I'll take this topic in the next class. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. This all is clear. Okay, ma'am. Right, enjoy. Have a great time. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.